Assalamu alaikum. In this video lecture, we will be talking about subject-verb agreement. So let's start. So our rule for today is rule number 10. In rule number 10 quotes, the use of verb with majority and minority. Majority uses singular verb. The majority holds strong views. Majority is authority. Minority again uses singular verb. The minority is respected in Pakistan. Then there is rule number 11, which quotes both singular and plural verbs are used with specific percentages. For example, 50% apples are rotten, 25% exam was out of syllabus. If it's exam, अगर आप singular चीज़ है तो इसके साथ singular use करेंगे, apples अगर plural है तो plural. Again, there is rule number 12. Rule number 12 basically quotes that plural words are used for the specific set of persons. ठीक है, जो स्पेसिफिक सेट ऑफ पर्सन्स है उसके लिए आप प्लूरल वर्ड यूज कर सकते हैं. इसके जो एग्जांपल आप देख लें एक दफ़ा, अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड. ठीक है, तो यहाँ पर आप मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ प्लूरल वर्ड यूज कर सकते हैं. फ्यू पीपल वर सिलेक्टेड फॉर एक्सचेंज प्रोग्राम, फ्यू पीपल के साथ आप प्लूरल यूज कर सकते हैं. Then we're going to talk about the rule number 13, which tells us about the quantity words. Quantity words are used alone or are used to modify the noun or adjectives. Some are singular, some are plural. Some can be used depending on the noun they are referring to. ठीक है, अब इस चीज़ को समझ लेते हैं. पहले तो आपने देख लेना है कि वो वाले nouns, वो वाले words अपने साथ singular words या noun देते हैं. Much, many are, and other less, a great deal of, a large amount of. और plural वाले हैं many, several, few, both, a great many and a few. इसके कुछ एग्जांपल्स देख लें. मच के साथ सिंगुलर आना था, मच इज नीडेड. ठीक है, फॉर दिस स्पेशल पर्पस इट टेक्स अ ग्रेट डील ऑफ टाइम. अगेन ग्रेट डील ऑफ के साथ आपका सिंगुलर आना था. अ लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क इज वेस्टेड डेली. अ लार्ज अमाउंट के साथ भी सिंगुलर आना था. लेस टाइम इज इन्वेस्टेड इन दिस टास्क. अगेन लेस के साथ सिंगुलर आना था. मेनी अ बॉयज इज नॉट फोकसिंग ऑन स्टडीज. तो अगेन मेनी आपके साथ सिंगुलर आना था. सेवरल इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड फॉर दिस रेसिपी. सेवरल इंग्रेडिएंट्स के साथ आपका प्लूरल आना था. एंड फ्यू पीपल वर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द गेम. Many books are written. तो few, several, many अपने साथ plural verb ले रहे हैं. Then there is rule number 14, which quotes that either or, neither nor, not only but also verb agrees with the nearer subject. Either he or I am good going abroad. तो nearer I है तो उसके according am लगा दिया. Not only I but also my friends love this movie. My friends nearer था, उसके according आपने plural word लगा दिया. Neither I nor she is beautiful. Again यहाँ पर आ गया. Then there is rule number 15, which basically quotes the clauses between the subject and the verb. Anyone who sees his or her friends runs to greet them. ठीक है, तो अब इसमें ये जो who sees his or her friends है, ये एक ऐसा clause है जिसको आप जो है ना वो redirect भी कर सकते हैं या फिर ignore भी कर सकते हैं. उसके बगैर भी आपका जो है ना वो सेंटेंस कंप्लीट होगा. देन देयर इज रूल नंबर 16 व्हिच कोट्स दैट a subject after here and there basically choose verbs for themselves. There was a man in the room. there के बाद सिंगुलर में वर्ड है man, तो इसके साथ आपने was यूज किया जो कि सिंगुलर है. and there were two men in the room. जब आपके पास two men आ गया तो इसके साथ आपको were यूज करना. Then it's rule number 17, which quotes that singular verb is used after the number of, for example, the number of stars in universe is uncountable. So the number of के साथ is आ गया. इसी तरह plural verb is used after a number of. A number of stars are so big that we cannot imagine. ठीक है, a number of stars are so big इसका correct version है. तो are आपको नजर आ रहा है. This is all for today. Thank you so much.